सिंगापुर का अद्भुत सफ़र। सिंगापुर का अद्भुत सफ़र। पोगो टीवी ने जब चिंटू खन्ना के घर फ़ोन किया तो पहले किसी को यकीन ही नहीं हुआ। आप जीत गए हैं सिंगापुर का शानदार फैमिली ट्रिप। मम्मी अनामिका और पापा अरुण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चिंटू और दीदी मीरा तो खुशी से उछल पड़े। आखिरकार पैकिंग शुरू हुई। मीरा ने अपनी प्यारी फ्रॉक रखी और चिंटू ने अपनी नई स्पाइडरमैन टोपी। सुबह के 4 बजे थे, पर चिंटू की नींद उड़ चुकी थी। आज उनकी फ्लाइट थी। आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचकर एयरपोर्ट की चमकदार लाइट्स देखकर उन्हें लगा जैसे वे किसी बड़े खिलौना घर में आ गए हैं। पापा अरुण ने टिकट दिखाए और मम्मी अनामिका ने चिंटू और मीरा को कसकर पकड़ लिया। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट सुबह 7 बजे उड़ने वाली थी। प्लेन में बैठते ही चिंटू को खिड़की वाली सीट मिल गई। मीरा चिंटू के पास बैठी थी। जैसे ही प्लेन हवा में उठा, दिल्ली छोटा और छोटा होता गया। थोड़ी देर बाद बाहर सिर्फ सफ़ेद रुई जैसे बादल थे। चिंटू चिल्लाया, मम्मी देखो, हम बादलों के ऊपर तैर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये रुई का महासागर है। मीरा ने भी बादलों की तस्वीरें अपने फ़ोन में कैद कीं। 6 घंटे की उड़ान के बाद उन्होंने घोषणा सुनी, हम सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं। चांगी एयरपोर्ट इतना साफ और सुंदर था कि मीरा ने कहा, यह एयरपोर्ट नहीं, कोई बड़ा पार्क लगता है। इमिग्रेशन और सामान लेने के बाद वे सीधे अपने होटल के लिए निकले। पापा ने बताया कि ये 7 स्टार होटल मोरे है। होटल मोरे का कमरा तो किसी राजा रानी के महल जैसा था। एक दीवार पूरी शीशे की थी जिससे पूरा सिंगापुर शहर दिखाई देता था। बेड इतने मुलायम थे कि चिंटू उन पर कूदने लगा। मम्मी अनामिका ने उसे पकड़ा और कहा, अरे चिंटू, पहले फ्रेश हो जाओ, आज रात हमें नाइट सफारी के लिए जाना है। अंधेरा होते ही वे दुनिया की पहली नाइट सफारी पहुंचे। यहाँ जानवर पिंजरों में नहीं थे, बल्कि वे खुले में घूम रहे थे। खन्ना परिवार एक विशेष ट्राम पिंजरे वाली वैन में बैठ गया। गाइड ने बताया कि ट्राम में सुरक्षा है। जैसे ही ट्राम जंगल में घुसी, चिंटू ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उन्हें शेर, हिरण और यहाँ तक कि एक बड़ा तेंदुआ भी दिखा, जो उनके इतने करीब था कि चिंटू को लगा जैसे वो उसे छू लेगा। दूसरा दिन सेंटोसा द्वीप के नाम था। वहां पहुंचने के लिए उन्होंने केबल कार ली। ऊपर हवा में उड़ते हुए समुद्र का नज़ारा बहुत अद्भुत था। सेंटोसा में सबसे पहले वे मैडम तुसाद म्यूजियम गए। मीरा और चिंटू ने अपने पसंदीदा सुपर हीरो और बॉलीवुड सितारों के मोम के पुतलों के साथ ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाईं। फिर वे अम्यूज़मेंट पार्क गए। चिंटू को रोलर कोस्टर की सवारी सबसे ज़्यादा पसंद आई। जैसे ही गाड़ी तेज़ी से नीचे गिरी, चिंटू चीखा, वाह कितना मज़ा आ रहा है। मीरा को थोड़ी देर डर लगा, पर जब पापा अरुण ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने भी हंसना शुरू कर दिया। ये सवारी के पल उनके सबसे प्यारे फ़ोटो एल्बम में कैद हो गए। तीसरा दिन। आज वे एक विशाल क्रूज़ शिप पर चढ़ने वाले थे। ये जहाज़ इतना बड़ा था कि चिंटू को लगा जैसे ये एक तैरता हुआ शहर है। इसमें एक सिनेमा हॉल था, एक बड़ा स्विमिंग पूल था और तो और छोटी मोटी दुकानें भी थीं। रात को डेक पर खड़े होकर समुद्र के बीच सितारों को देखना चिंटू को सबसे ज़्यादा पसंद आया। बाद में उन्होंने एक शानदार म्यूजिकल शो देखा। चौथे दिन उन्होंने सिंगापुर शहर घूमने का फैसला किया। वे लिटिल इंडिया गए, जहां उन्हें भारतीय संस्कृति और खाने की खुशबू आई। मम्मी अनामिका ने मुस्तफ़ा मॉल से कुछ तोहफे खरीदे। चाइना मार्केट में उन्हें रंग बिरंगे लैंप और खिलौने मिले। लंच के लिए वे मोती महल रेस्टोरेंट गए, जहां उन्हें गर्मा गर्म बटर चिकन और नान मिला। 5 दिन बाद खन्ना परिवार सिंगापुर की अपनी शानदार यादों को लेकर वापस दिल्ली लौट रहा था। प्लेन में बैठकर चिंटू ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, सिंगापुर ट्रिप सबसे अच्छा एडवेंचर था। हमने बहुत मज़ा किया। पोगो टीवी का धन्यवाद। पापा और मम्मी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनके बच्चों के चेहरों पर खुशी की चमक थी। नमस्ते दोस्तों, मैं चिंटू बोल रहा हूँ। ये थी मेरी सिंगापुर यात्रा की कहानी, जिसे हमने पापा, मम्मी और दीदी के साथ मिलकर पूरा किया। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, जल्दी ही मिलते हैं। Chintu's Singapore Spectacular, the trip of a lifetime. Hey guys, welcome back to my blog. You won't believe what happened. My name is Chintu Khanna and I am 7 years old. I won a super duper contest from Pogo TV. The prize? A fully sponsored, all expenses paid family trip to the super cool country of Singapore. My sister, Mira Didi, and I screamed so loud when we heard the news. Mira Didi is 10 and she always smiles gently, but she was jumping higher than me. We were so excited to tell Papa and Mama. Mama, Anamika Khanna, immediately started planning everything.
She has the warmest smile and usually wears casual jeans and a t-shirt. Papa, Arun Khanna, who is tall and smart and always looks professional in a suit, got us all little travel books. The biggest adventure was packing. Mama kept double-checking my bag. I was wearing my favorite red Adidas cap, even while trying to fit everything. We woke up before the sun to leave for IGI Airport in New Delhi. The taxi ride felt like a spaceship going warp speed. Getting on the Indian Airlines flight was like stepping into a giant flying theater. After a long, colorful journey over blue clouds, we finally landed at Changi Airport in Singapore. It smelled like flowers and excitement. Our ride took us to the Moria Hotel, which Papa said was 7 stars. Papa was looking very smart, even after the flight. When we entered our room, my jaw dropped. It was huge. The whole city glittered outside our window like a million tiny diamonds. Our first big adventure was that same evening, the night safari. This wasn't a normal zoo. Papa explained it was like a huge jungle that came alive only at night. We had to sit inside a special cage-type van called a tram to protect us, which was super thrilling. Mira Didi gripped my hand tightly. The jungle noises were so loud, but the air was cool and smelled earthy. Everything felt mysterious. Wow, guys, the animals! I saw spotted deer walking right next to the tram, and giant rhinos having a midnight snack just a few feet away. But the best were the big, graceful giraffes reaching high up into the trees. I pressed my face against the cage mesh, trying to wave at them, but they were too busy munching. It was so real, it was almost scary, but mostly, it was the best jungle adventure ever. The next morning, we went to Sentosa Island. To get there, we rode a cable car high above the water. Mama and Mira Didi sat together, giggling, as we soared past skyscrapers and blue ocean. Mira Didi kept saying it was like flying. Once we landed, we ran straight to the beach. Mama dipped her feet in the water, splashing Mira Didi, who chased her back to the soft sand. It was so sunny and warm, a perfect beach day. Sentosa was one big fun park. Papa and I explored the famous Madame Tussauds Museum. I stood next to wax statues of superheroes and movie stars. Papa, who always looked so smart, even posed like a superhero next to one. Then we went on the super fast rides at the amusement park. My tummy flipped 6 times, but I shouted, "Again! Again!" Papa bought us giant ice creams after, and we sat laughing, sticky hands and all. The third day was the biggest surprise, a luxury cruise. We stepped onto this huge ship, and Mira Didi gasped. It wasn't a boat, it was a floating city. It had its own cinema hall, swimming pool, and even a shopping center. We waved goodbye to Singapore as the ship slid out onto the big, beautiful ocean. Mira Didi and I raced to the observation deck. We watched the endless blue waves, holding onto the railing and feeling the fresh, salty wind. After the cruise, we had a full day dedicated to the city tour. Mama said we had to see the culture. We went to Little India first. It was so colorful and busy, smelling like spices and garlands. Mama loved shopping at the huge Mustafa Mall. Then we walked through the old, traditional streets of Chinatown. For lunch, we ate amazing butter chicken and naan at a place called Moti Mahal in Little India. Mama made sure I tried every dish. It tasted exactly like home, but with Singapore spice. We took so many photos. Papa and Mama said this trip, all thanks to my pogo win, was the best family bonding time ever. Papa looked happiest when he was just sitting with Mama, watching Mira Didi and me try to count the stars in the tropical sky. It felt like time slowed down just for us. Leaving Singapore felt a little sad, but our suitcases were full of souvenirs, and our hearts were full of sunny, happy memories. Back at IGI, we hugged Papa and Mama and thanked them for the incredible adventure. So that was my Singapore spectacular. From the thrilling night safari to the giant luxury cruise and all the delicious food in between, it was the best trip a 7-year-old could ask for. Now, I have to go unpack my awesome souvenirs. If you liked my story,
Please like, share, and subscribe to my blog. And don't forget to press the bell icon for the latest updates. See you next time for more adventures. Bye.